Good evening, everyone. I'm Preeta Tripathi, Deputy General Manager, Trainings and Capacity Building here in FICSI. And it gives me immense pleasure to welcome all of you who have taken time out and joined us in today's session for this webinar on a very interesting and a very a sincere topic, which is overview of rice fortification. Today, we will be throwing some light on what is rice fortification, how does it impact the health and why it is the need of the hour for a country like ours. We all know that given the rise in population and a major uh, part of our population who does not has access to nutritious food, how can fortifying rice be that vehicle through which we can address certain issues in women and children, more specifically anemia. So we will be touching base on that, and also we will be talking about the process very superficially about what rice fortification is, how it is being done, and what are the government regulations with regards to the certain levels of fortificants that are added in rice. So I'll take just 4 minutes of your time in introducing you to my organization, that is FICSI, post which we will be starting our session. So, FICSI, or the Sector Skill Council for Food Processing, it was incorporated in 2013 as an autonomous not-for-profit societies under the aegis of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. And its line ministry is Ministry of Food Processing Industries, which is MOFPI. We are an awarding body which are approved by NCVT, that is the National Council for Vocational Education and Training. uh, the roles and responsibilities or the work that FICSI does as a sector skill council, it is governed by our governing body members. And as you can see on the screens in front of you, we have uh, representations from industries like Nestle, Britannia, ITC, Hindustan Unilever, Haldiram's, Mother's Recipe, LT Foods, Adani Wilmar, so on and so forth, as part of our governing body members. From the government side, the CEO of FSSAI is also a part of our governing body, as well as representations we have from Ministry of Food Processing Industries, NSDC, and CFTRI. When it comes to what are the actual roles and responsibilities that the Food Processing Sector Skill Council undertakes, the most important function for us is to identify the skill development needs in the food processing sector at large. So when I say the food processing sector, we mean the entire food processing sector of our country, across all different subsectors, across all the states, all the regions, everything. So determining the skills and competency standards and qualifications and getting them notified as per NSQF. So NSQF is the National Skills Qualification Framework. So I'll just give you a little brief here. So when I talk about skill development needs, it means, identifying the skill gaps in different sectors. For example, if you talk about rice fortification, that is what we are discussing here today. So in rice fortification, as we all know, PM has notified that by 2024, all the rice, that is distributed through the PDS system has to be fortified. Now, when we are looking at a country like ours, that has a huge population. So the amount of food processing or the processing of rice that would be required, that is immense. So obviously there will be some gaps, to meet the demand of the industry and provide a manpower that is efficient in the skill of fortifying. So that is how, we identify the gap in the skill that is required for any industry or any sector specifically. Post that, the content is developed, which is aligned with the National Skills Qualification Framework. So this National Skill Qualification Framework is the qualification framework under government that regulates the content, the curriculum, and the way the skill or the skill-based training will be disseminated to the candidates. So this is a very brief overview on it. Then standardizing of the training centers, their affiliation, accreditation, examination, and certification. So we have made the content, we got it notified by the government. Now the next step will involve
disseminating these courses through skill-based trainings. So these trainings, they happened at notified centers that are empaneled and identified by us, and they are conducted by trained trainers who undergo a training of trainers program. And at the end of the training session, the candidates undergo an assessment through the assessors that are again trained and certified by the Sector Skill Council, aligned to the qualification that they are getting trained upon. Apart from that, we also facilitate in placement of the skilled candidates within the food processing industry. So this is like one of the a major part of what we are doing. So other roles that we take care is again conducting research and identifying the skill gaps. We are also involved in doing multiple social impact projects. So I would urge you all to visit our web portal, which is FICSI.in. You can have a look at all the various subsectors and sectors in the food processing industry on which we have created job roles, where we constantly provide skill based training and move towards generating employment and livelihood opportunities for the youth. Apart from that, we also have a quality assurance system in place. So getting the trainings aligned and done is just one part. We also have to ensure that the trainings are done right. So we have agencies that monitor the quality of these trainings to ensure that the candidates get the optimum training material, the training infrastructure, and proper dissemination through the trainers. That ensures at the end of the training, the candidate is ready for the industry and can start working the moment they get certified. So some of the subsectors, that we have developed qualification packs, and the trainings have been happening from the last 7 years, are bread and bakery, fruits, vegetables, dairy products, food grain milling, fish and seafood, multi-sectoral skill-based technicians, and packaged food items. You can have a look at some of these skilling activities, training activities in front of you. And on top of that, all this training material, we are very happy to say that we have in-house learning management system, which is available through our website, and it is also available as an app on Android, where you get access to all these training material and videos. Some of these materials, you get in a self-paced manner. So you can, go ahead, register yourselves and get access to this huge repository of knowledge on food processing sector. So with this, I would now like to call upon our first speaker for today, Deepti Gulati ma'am. Let me just close the sharing. Give me a second. Mm. Just give me a second. Just give me a second. There's some technical glitch. I'm not able to get rid of my screen. Just a second. Sorry for the technical glitch. I would now like to call upon Dr. Deepti Gulati ma'am. Ma'am has been a stalwart in the fortification and nutrition scene in our country, and most of us who are there, from this domain, they already know her. They would have heard about her, and we are very happy that ma'am had taken time off out of a busy schedule, and she has agreed to take the first session on this fortification with us. Uh, Over to you, ma'am, and thanks so much for joining us.
Hello, I hope you can hear me loud and clear. So it's such a pleasure to be here, to be talking to you all. Though we may have heard about each other, and but today we need to hear about fortification. So I'm industry chair professor at NIFTEM, National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management. And prior to that, I have been working for last 44 years in the area of nutrition, and for the past 23 years in food fortification. So आज मैं आपको ना बहुत सारी चीजें fortification पे बताने जा रही हूँ, और आप feel free to ask any questions at the end of the session, क्योंकि हो सकता है आप preempt कर रहे हो जो मैं बताने जा रही हूँ. ठीक है? So let's start. प्रेजेंटेशन मोड पे कर दीजिए. हाँ, कर रही हूँ. Oh, right. Yes. So अगर टेक्निकल ग्लिचेस ना हो तो किसी वेबिनार में मजा नहीं आता. सो हमने सोचा आपको थोड़े से मजे टेक्निकल ग्लिचेस के भी दिखा दें. हाँ, सो अब हम फोर्टिफिकेशन पे आते हैं, और आते आते थोड़ा समय लग जाएगा, कोई बात नहीं. सो नाउ वी आर बैक ऑन ट्रैक. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि न्यूट्रिशन जो है आज नई चीज नहीं है. न्यूट्रिशन हैज बीन देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, which recognized nutrition as a basic human right and a prerequisite for attainment of person's full physical and mental development. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47 है, it very clearly states that raising the level of nutrition, the standard of living of its people, and the improvement of public health is among its primary duties. So हम कॉन्स्टिट्यूशनली भी कमिटेड हैं न्यूट्रिशन इंप्रूव करने के लिए. Now let's look at a typical Indian diet, what all we eat. जो हम खाना खाते हैं वो नॉर्मली 50% हमारे ग्रेन्स एंड ट्यूबर्स होते हैं. ग्रेन्स मीन्स सीरियल्स एंड ट्यूबर्स इज पोटैटोज, क्योंकि हम तो हर सब्जी में आलू डालेंगे ही, बिना आलू के तो कोई भी सब्जी नहीं बनती है हम लोगों के. तो 50% of our diet is made up of cereals and potatoes. 17% of our diet is made up of milk and milk products, चाहे वो milk हो, चाहे वो दही हो. 9% is meat, egg, dal, legumes. 2% is fruits, 9% is vegetables, and 7% is sweets, क्योंकि इंडियंस का बिना मीठे के तो गुजारा होता नहीं है. Now this type of diet is basically a cereal rich diet, and it has very few micronutrients, because micronutrients are by and large present in vegetables, fruits, milk, and meat products. Now our balanced plate should look like what I have shown you now. Vitamins and minerals are required on a daily basis so that we can build up our body, grow, and protect ourselves from diseases, infections, and remain healthy. And if you would see in this slide, you would find कि जितना हमको cereals खाने हैं उतना ही हमें fruits and vegetables भी खाने हैं. बट अपने आप से पूछ के देखिए, क्या आप vegetables उतनी खाते हैं? क्या fruits उतने खाते हैं? Milk and dairy products की भी quantity हमको ज़्यादा लेनी चाहिए. Fats की quantity कम लेनी चाहिए, पर वो हम बहुत ज़्यादा लेते हैं क्योंकि हम लोगों को तला बहुत पसंद है, और जब तक घी तेल तैरे नहीं स्वाद नहीं आता. सो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको अपनी डाइट में रीलुक करना बहुत ज़रूरी है. अब अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा देखें तो जो हमने प्रेजेंट अभी जो रिसेंटली रिलीज डेटा है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अनीमिया यानी शरीर में खून की कमी होना, ये हमारे सारे एज ग्रुप्स में बहुत है. विमेन
जो इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 ईयर्स, जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, और जहाँ पे हम सबसे ज्यादा सशक्त अपने आप को समझते हैं कि हाँ हम बहुत मजबूत हैं, हम सब काम कर लेंगे, 57% ऑफ women in this age group are anemic, खून की कमी है. Pregnant women in the same age group of 15 to 49 years who are anemic is 52%. और ये 52% ये तब फिगर है जब वो आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स भी उनको दी जा रही हैं, खाती हैं या नहीं खाती उसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं कर रहे. But pregnant woman has to cater for herself as well as for the baby in her womb. उसके बावजूद भी anemia is 52%, like one in every 2 women is pregnant woman is anemic. So we need to take care of it. When we look at all women in the age group of 15 to 49 years, whether they are pregnant or non-pregnant, 57% of women are anemic. Men, women का तो हम फिर भी सोच सकते हैं कि menstruation है, इस वजह से भी शायद थोड़ा iron loss होता होगा blood loss के साथ. But what about men? 25% of men are also anemic. And when we look at children in the younger age group, 67% of children are anemic. That means 3 में से 2 बच्चे जो हैं वो anemic हैं. खून की कमी. अब आप कहेंगे कि ये तो खून की कमी बोलती जा रही है, पर खून की कमी की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खून की कमी का हमारे शरीर के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है. इसके अलावा हम दूसरे विटामिन और मिनरल्स की कमी को भी देखना शुरू करें तो विटामिन ए और विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो भी हमारे देश में बहुत है. विटामिन ए जो है वो हमारी आंखों की रोशनी बनाए रखने के लिए और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है. और कोरोना काल में तो आपने सबने देख लिया ना कि इम्यूनिटी बड़ी होनी चाहिए. इम्यूनिटी शब्द तो सबको मालूम है. सो ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको विटामिन ए की जरूरत पड़ती है. और हमारी हड्डियां जो हैं वो कमजोर होती हैं, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं. क्यों? कैल्शियम आप लें, पर अगर आपके शरीर में विटामिन डी नहीं है या विटामिन डी की कमी है तो वो कैल्शियम हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता. अब विटामिन डी जो है वो बहुत ही कम फूड्स में पाया जाता है. कुछ मशरूम्स हैं जिनमें पाया जाता है, कुछ सी फूड्स हैं उनमें पाया जाएगा. या आप अच्छे से धूप सेकें 11 बजे से लेकर 1 बजे के टाइम में. और धूप सेकने का मतलब ये नहीं है कि हमने मुंह पे सन ब्लॉक लगा लिया और फुल स्लीव्स के कपड़े पहन लिए और मुंह ढक लिया, फिर नहीं आपको विटामिन डी मिलेगा. यदि आपकी आर्म्स और लेग्स और फेस सन को एक्सपोज्ड है फॉर मिनिमम ऑफ 15 to 20 मिनट्स, तभी आपकी बॉडी में सन रेज जो है वो विटामिन डी बना सकती हैं. पर वो तो हम करते ही नहीं, क्योंकि हमको यही डर लगा रहता है कि हमारा रंग काला पड़ जाएगा, धूप बहुत तीखी है और पसीने आएंगे, कौन बैठे. सो इन सब के चलते विटामिन डी की कमी भी बहुत है. अगर आप ये देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, आप देख रहे हैं कि 50 to 94% डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी है. लखनऊ 75 to 90%, मुंबई 88%, कोलकाता 92%, हैदराबाद 34 to 52%. एंड ऐसे जाते जाएं साउथ में तो आपको वहां पे भी बहुत अधिक विटामिन डी डेफिशिएंसी दिखाई देगी. अगर आप विटामिन ए डेफिशिएंसी देखें तो हाँ, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का डेटा है, जिसके अनुसार अगर आप देखते हैं तो विटामिन ए डेफिशिएंसी ब्लड लेवल पे जो है वो 62% पॉपुलेशन में है. और अगर हम देखें कि क्यों है और कितनी पॉपुलेशन जो है वो विटामिन ए रिच फूड खा रही है, तो दिखता है साफ कि 86% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 50% ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट भी नहीं खा रही. तो अगर 86% ऑफ द पॉपुलेशन 50% ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट भी नहीं खाएगी तो विटामिन ए डेफिशिएंसी होना लाजमी है. So India does have a very high burden of vitamin A and D deficiencies which impact everyone, whether it be rich or it be poor, whether it be men, women, everyone.
Now, as I was saying, कि why should we be focusing on hunger and micronutrient malnutrition? इन सब की चर्चा कर रहे हैं, आप भी सुनने आए हैं, तो क्यों ये जरूरी है? हंगर और malnutrition जो है, they stunt the growth. ये हमारी वृद्धि को रोक लेते हैं, और ये वृद्धि जो है, ये शारीरिक वृद्धि नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक वृद्धि भी है, और इंटेलेक्चुअल as well as physical growth कम हो जाती है, which leads to premature death, disability, क्योंकि अगर हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, हमें दिखना बंद हो जाएगा, तो ये डिसेबिलिटी है। अगर हमारी हड्डियां जो है वो कमजोर होंगी तो वो टेढ़ी हो जाएंगी, वो एक डिसेबिलिटी है। और फिर अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी है तो हमारी इम्यूनिटी कम होगी, लाइफ लॉन्ग ससेप्टेबिलिटी टू इलनेसेस रहेगी। पुअर कॉग्निटिव एंड लर्निंग स्किल्स, कॉग्निटिव मतलब आपका दिमागी शक्ति जो है वो तेज होना, और अगर आपकी दिमागी शक्ति जो है वो कमजोर होगी तो आप कैसे ना तो पढ़ पाएंगे ना कुछ नया सीख पाएंगे। हम यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से जितनी मर्जी स्किल सिखा लें, समझ ही नहीं आएगी। सो पुअर लर्निंग एबिलिटी, पुअर एजुकेबिलिटी, ये सब जो है ये आयरन की वजह से है, जिसकी हम चर्चा पहले कर रहे थे। और एनीमिया लेवल्स बच्चों में 67% है, सो दीज आर वेरी हाई। लो अचीवमेंट इन स्कूल, अगर बच्चे को समझ ही नहीं आएगा, दिमाग ही नहीं चल रहा, पढ़ ही नहीं पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा, तो उसकी स्कूल अचीवमेंट कैसे अच्छी होगी? दिस वुड लीड टू पुअर परफॉर्मेंस इन द स्कूल। और अगर बच्चा परफॉर्म नहीं करेगा स्कूल में, पेरेंट्स कहेंगे शैतानी में ध्यान रहता है इसका, इसके ऊपर पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं, इसको निकाल लो, किसी काम पे लगा दो। सो स्कूल ड्रॉप आउट रेट ऑल्सो बढ़ जाते हैं जब हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती हैं। इसके अलावा लो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट होगी तो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कहाँ से होगी? पैसा कमाने के लिए आपको शारीरिक ताकत और दिमाग तो चाहिए ना, दोनों ही नहीं है, और दोनों ही कमजोर हैं। अगर दोनों कमजोर होंगे तो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी? लो वेजेस होंगे और फिर पॉवर्टी होगी। सो मैल न्यूट्रिशन स्टार्ट्स अर्ली, राइट फ्रॉम द वूम। और जिस लेवल के हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट मैलन्यूट्रिशन है जो मैंने आपको अभी दिखाया, दिस इज unacceptable, and it should be unacceptable to all of us, and we should work to remove this, improve it, starting right from ourselves, because ये deficiencies जो हैं ये preventable हैं, but अगर हो जाए they are irreversible। अगर आपका mental growth stop हो गया, अगर आपकी physical growth stop हो गई, तो ये reverse नहीं किए जा सकते। आप ये सोचें कि स्टंटेड हाइट है और 22-25 साल के होंगे तो फिर ये फटाफट 1 फुट और बढ़ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। देन इंडिया इज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज वेरी यंग, जिसे हम कहते हैं कि दिस इज आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड। सारी वर्ल्ड में एजिंग पॉपुलेशन है, इंडिया में यंग पॉपुलेशन है। बट इफ द levels of micronutrient malnutrition are so high, which seriously impair the development of human capital, labor productivity, and future social and economic development, तो ऐसी सी यंग पॉपुलेशन का क्या डिविडेंड हमें मिलेगा? दिस विल नॉट बी अ डिविडेंड, दिस विल बिकम अ डेमोग्राफिक लायबिलिटी। आपको हर जगह बच्चे जो हैं वो सड़कों पे मिलेंगे भीख मांगते, वो तो हमको नहीं चाहिए ना। हमको चाहिए एक सजग राष्ट्र जहाँ पे हम खूब मेहनत से कमा सकें, स्वस्थ रह सकें और देश को बहुत आगे बढ़ा सकें। नाउ लेट्स सी कि न्यूट्रिशन क्या पॉवर्टी इशू है? क्योंकि हम कहते हैं वो बेचारे गरीब हैं। अब गरीब तो कई वजह से भी हो सकते हैं, पर क्या गरीबी से ही मेल न्यूट्रिशन होता है? तो अगर आप देखते हैं स्टंटिंग यानी लेस हाइट फॉर एज, इसमें हाईएस्ट इनकम क्विंटाइल में 23% ऑफ द पॉपुलेशन, लोएस्ट इनकम क्विंटाइल में 46% ऑफ द पॉपुलेशन चिल्ड्रन आर स्टंटेड। अंडरवेट लीजिए 20% इन हाईएस्ट क्विंटाइल, 43% इन लोएस्ट क्विंटाइल। थिननेस इन विमेन 10% इन हाईएस्ट क्विंटाइल, 28% इन हाईएस्ट क्विंटाइल। So undernutrition definitely affects poorest the most, क्योंकि वो उनको पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल रहा। बट अगर हम अनीमिया देखें, और ये मैं आपको NFHS
5 का डेटा दे रही हूँ कि अगर हम अनीमिया देखें, अनीमिया इन चिल्ड्रन 63% in highest income quintile, 71.5% in the lowest income quintile. Anemia in women, 51% in highest income quintile and 64% in lowest income quintile. Those who are consuming vitamin A rich foods, 47% in the highest income quintile, 49% in the lowest income quintile. Similarly is the case with those consuming iron rich foods or those consuming minimally acceptable diets. So अगर आप इनको देखते हैं, इन फिगर्स को देखते हैं जो भी मैंने हाईलाइट किए, you will find that poor consumption of adequate diet and micronutrient deficiencies or micronutrient rich diets and anemia, they affect all. वो कहते हैं हम सबको इम्पैक्ट करेंगे क्योंकि कोई भी ना तो प्रॉपर डाइट ले रहा है, ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले रहा है, ना आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स ले रहे हैं, ना विटामिन ए ड्रॉप्स ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा? विटामिन ए, विटामिन डी, आयरन, इनकी कमी रहेगी और जिनके इम्पैक्ट मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। नाउ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने 2020 दिसंबर में एक रिकमेंडेड डेली डाइवर्सिफाइड डाइट का चार्ट निकाला था कि विमेन को, मेन को, बच्चों को और डिफरेंट कैटेगरी, सिडेंट्री हैं और दे आर मॉडरेटली एक्टिव मैन, विमेन, इनको क्या क्या खाना चाहिए, कितनी डाइवर्सिफाइड डाइट खानी चाहिए ताकि ये स्वस्थ रह सकें। सो ये फिगर आपके सामने है कि सीरियल्स कम से कम 200 ग्राम खाना चाहिए एक सेडेंट्री वुमन को और एक सेडेंट्री मैन को 275 ग्राम खाना चाहिए। मॉडरेटली एक्टिव मैन को 300 ग्राम्स ऑफ सीरियल खाना चाहिए और मॉडरेटली एक्टिव वुमन को 300 ग्राम सीरियल खाना चाहिए। ऐसे आप देखेंगे तो आपको सारा इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। अब अगर हम इसकी कॉस्टिंग करें, कॉस्ट पर केजी इन रुपीज, और अगर आप ये देख रहे होंगे मैंने ये कॉस्ट बहुत ही मिनिमल लगाई है और सीरियल्स की कॉस्ट मैंने 3 रुपीज लगाई है, जो कि हम पीडीएस के थ्रू जिनको सीरियल्स मिलते हैं अगर वो भी देखें, 3 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, और अगर हम इस रेट पे भी देखें तब भी आप, और पल्सेस जो हैं 80 रुपए किलो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स 30 रुपए किलो, मिल्क 40 रुपए किलो, अगर हम इन रेट्स पे देखते हैं तो भी आप देखेंगे कि एक सिडेंट्री वुमन को और एक मॉडरेटली एक्टिव वुमन को डाइवर्सिफाइड डाइट लेने के लिए कम से कम 46 रुपीज का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। सिमिलरली एक मैन को, मॉडरेटली एक्टिव मैन को और सेडेंटरी एक्टिव मैन को कम से कम 45 to 48 रुपीज पर डे का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन अगर हम 50 रुपए ले लेते हैं कि 50 रुपए आपको रोज खर्चने पड़ेंगे एक व्यक्ति की खाने पे, तो कम से कम एक घर में आपके पास 5 व्यक्ति तो होंगे। सो 5 व्यक्ति का मतलब है अगर हम 50 रुपए का रोज सोचें तो 250 रुपए का हमको एक्सपेंडिचर रोज का रोज सिर्फ अपने खाने पे करना पड़ेगा, वो भी जब हम कॉस्ट इतनी लो रख रहे हैं। समटाइम्स दिस इज अनअफोर्डेबल, क्योंकि 250 रुपए रोज का मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 30 दिनों से, तो अगर करते हैं तो 7,500 से 8,000 रुपया सिर्फ आपको एक डाइवर्सिफाइड डाइट लेने के लिए चाहिए, और कई बार ये अनअफोर्डेबल हो जाता है। अब अगर अनअफोर्डेबल है तो क्या हमको सिर्फ कुपोषित रहना है कि हमको इसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं? तो अगर हम देखते हैं तो देयर आर 3 स्ट्रैटेजीज जिससे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट मैलन्यूट्रिशन कंट्रोल कर सकते हैं। एक है सप्लीमेंटेशन, यानी कि सिरप्स और टैबलेट्स देना, जैसे कि वीकली आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स लड़कियों को, बच्चों को स्कूल में दी जाती है, महिलाओं को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दी जाती हैं। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और इसमें विटामिन ए ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं एवरी 6 months बच्चों को फ्रॉम 1 year to 5 years। पर इनकी आउटरीच होने के बावजूद भी इनका अपटेक, यानी कि लोग जाके लें, खाएं और रेगुलरली अपने सब बच्चों को दें, ये हो नहीं पा रहा है।
और ओनली 55% ऑफ द पॉपुलेशन इज बीइंग कवर्ड। दूसरी है डाइटरी डाइवर्सिटी के, जैसा मैंने बताया कि डाइवर्सिफाइड फल खाएं, सब्जियां खाएं, हरे पत्ते वाली सब्जियां खाएं, दूध पिएं। नाउ अगर हम उसको देखते हैं, देन द कॉस्ट बिकम्स टू हाई एंड दिस बिकम्स एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी इशू। फिर आता है स्टेपल फूड फोर्टिफिकेशन, जिसमें हम खा रहे हैं, स्टेपल में आप कुछ भी फल सब्जी ना खाएं, पर आप अनाज तो खा रहे हैं, और अगर आप थोड़ा बहुत तेल भी अपने खाने में डाल रहे हैं, और चाय के लिए दूध तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। सो ये चीजें जो हम रोज खाते हैं, उनको हम स्टेपल फूड्स कहते हैं। और अगर हम स्टेपल फूड्स में ही ये पौष्टिक तत्व मिला दें, तो उसको हम फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। जो फूड फोर्टिफिकेशन है, ये मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें बहुत कम दाम लगता है किसी भी सीरियल को, किसी भी मिल्क को, किसी भी राइस को फोर्टिफाई करने के लिए, या ऑयल को फोर्टिफाई करने के लिए। सो फोर्टिफिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, low cost strategy, and it can yield results in the shortest period of time। बहुत जल्दी इसका असर भी दिखाई देता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर्स नो बिहेवियर चेंज और बिहेवियर मॉडिफिकेशन और कंप्लायंस एट द कंज्यूमर लेवल। आप मेडिसिन खाना भूल सकते हो, कैप्सूल खाना भूल सकते हो, रोटी खाना तो कोई नहीं भूलता ना। तो अगर आपकी रोटी में, आपके चावल में ही पौष्टिक तत्व हो, तो वो आपके शरीर को उपलब्ध हो जाएंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फूड फोर्टिफिकेशन। ये फूड फोर्टिफिकेशन जो है, ये एक एनरिचमेंट प्रोसेस है, जिससे आप विटामिन्स और मिनरल्स को, खनिज लवण और विटामिनों को अपने भोजन में डालते हैं। फोर्टिफिकेशन ऑफ स्टेपल्स लाइक व्हीट फ्लावर, ऑयल, मिल्क, राइस, ये बहुत सॉल्ट, ये बहुत आसान है, और इससे हम डाइटरी डेफिशिएंसीज को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी अ प्योरली कमर्शियल चॉइस। जैसे आप देखते हैं, मैं अब प्रोडक्ट्स के नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर आपने देखा होगा दूध में मिलाने वाले कई सारे ऐसे तत्व आपको मिल जाएंगे कि ये इसके अंदर विटामिन है, इसके अंदर खनिज लवण है, आप खाइए और तंदुरुस्त हो जाइए। वो कमर्शियल चॉइसेस होती हैं। फिर फूड फोर्टिफिकेशन जो है, ये हमें एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देते हैं, जिससे हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। फूड फोर्टिफिकेशन इंडिया में आज हम बात कर रहे हैं, बट विश्व में ये नई चीज नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 1918 में, आज से 105 साल पहले मैंडेटरी कर दिया गया था फोर्टिफिकेशन ऑफ मिल्क विद विटामिन डी इन कनाडा। फिर अगर हम देखते हैं 1923 में यूएसए में फूड फोर्टिफिकेशन मैंडेटरी किया गया। इस तरीके से आप देखते जाइए, 1918, 1923, 1933, 34, 1940, 1954। जबकि 1954 में अगर आप देखेंगे, व्हीट फ्लावर जो है, चिली जैसी कंट्री, जो एक छोटी सी कंट्री लैटिन अमेरिका में है, वहां पे भी बी विटामिन और आयरन के साथ व्हीट फ्लावर को फोर्टिफाई करना 1954 में शुरू हो गया था, और हम आज बात कर रहे हैं और वो तब भी नहीं हो रहा। तो हमने सबसे पहले 1953 में वनस्पति को फोर्टिफाई करना शुरू किया था विद विटामिन ए एंड डी डाला जा रहा था उसकी गुणवत्ता और उसकी स्टेबिलिटी के लिए। फिर 1962 में हमने सॉल्ट आयोडाइजेशन शुरू किया, ताकि घेंगा और आयोडीन डेफिशिएंसी जैसी बीमारियों को दूर कर सकें। So over the last 100 years, food fortification has played a very major role in improving the health of populations at large in the industrialized countries, and several nutritional deficiencies have been completely eliminated. कई हमारे मित्र हैं जो यूएस में और यूरोप में रहते हैं, वो कहते हैं जी हमारा बच्चा मेडिसिन कर रहा है, इसको हम इंडिया भेजना चाह रहे हैं। अच्छा जी, जरूर भेजिए, पर क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो डेफिशिएंसी, डिजीजेस, न्यूट्रिशन की दिखती नहीं है। इंडिया में तो ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। बहुत दुख होता है कि किसी को इंडिया इसलिए आना है ताकि वो विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी और आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया इंडिया में लोगों में आके देख सके। हमको इस इमेज को बदलना है,
और इसकी हम सबकी जिम्मेवारी है। राइस फोर्टिफिकेशन को करंटली हम बहुत फोकस कर रहे हैं, पर आपको ये भी समझना चाहिए कि राइस फोर्टिफिकेशन जो है ये 6 कंट्रीज में कंपलसरी है। कोस्टा रिका, निकरागुआ, पनामा, पापुआ न्यू गिनी, जहां आजकल हमारे मोदी जी गए हुए हैं, सोलोमन आइलैंड एंड फिलीपींस। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में 6 स्टेट्स में फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस इज मैंडेटरी, और हमको भी इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। The strategic advantages of fortification are कि staple foods are consumed by all and they are best suited for fortification. It is a proven, simple, low cost technology. बहुत आसानी से fortification किया जा सकता है। Population wide approach है, क्योंकि हम PDS के थ्रू जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 68%, 62 to 68% पॉपुलेशन को तो हम PDS के थ्रू कवर कर सकते हैं। ICDS है, MDM है, मिड डे मील्स है, वहां पे हम पॉपुलेशन वाइड अप्रोच कर सकते हैं यूजिंग फोर्टिफाइड फूड्स। देन सेंट्रली प्रोसेस्ड होता है, तो इसलिए गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है और कोई एक्सेसिव इनटेक नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन कलर, टेक्सचर और क्वालिटी ऑफ सीरियल्स एंड हेंस हाई एक्सेप्टेबिलिटी। आप देखेंगे बहुत से तेल जो आजकल आप खा रहे हैं उन पे आप घर जाके देखिएगा +F का लोगो लगा है, यानी इसके अंदर विटामिन ए और डी मिलाया गया है। दूध आप ले लीजिए, चाहे वो मदर डेयरी का है या प्राइवेट डेयरीज का है या NTDB की डेयरीज का है, उन सब पे +F का लोगो है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन ए और डी डाला जा रहा है। सो टेस्ट में तो फर्क आया नहीं, आया होता तो आप तो कब के शोर मचा चुके होते और ये बंद हो चुका होता। सो इट हैज नो चेंज ऑन कलर, टेक्सचर एंड क्वालिटी। और बायो अवेलेबिलिटी, यानी हमारे शरीर को कितनी आसानी से ये पौष्टिक तत्व प्राप्त हो जाते हैं, अमेजिंग। बहुत हाई बायो अवेलेबिलिटी होती है और इम्पैक्ट होता है। देन fortification improves our work capacity, health and contributes to improving national economic growth. अगर हम कॉस्टिंग देखें, आप देखिए 1 किलो व्हीट फ्लावर को फोर्टिफाई करने की कॉस्ट सिर्फ 10 पैसा है, राइस को फोर्टिफाई करने की पर केजी कॉस्ट 50 पैसे, तेल को 15 पैसे और दूध को सिर्फ 2 पैसे है, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। अगर हम पर पर्सन पर ईयर की कॉस्ट करें ना, तो एक साल में हम 8 किलो से ज्यादा, एक महीने में हम 7 किलो से ज्यादा अनाज नहीं खाते, और उसके हिसाब से पूरे साल में जो फोर्टिफिकेशन के ऊपर कॉस्ट आती है एक व्यक्ति के ऊपर सिर्फ 35 रुपए है, और वो जो 35 रुपए वो एक उसकी कॉस्ट आपकी एक चॉकलेट से भी कम है। सो कॉस्ट इफेक्टिव है। इसके अलावा रेगुलेटरी सपोर्ट है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने परमिट किया है फोर्टिफिकेशन, स्टैंडर्ड्स जो हैं गजट किए हुए हैं। 10th, 11th, 12th 5 ईयर प्लान्स, पोषण अभियान, ये फूड फोर्टिफिकेशन रिकमेंड करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने मैंडेटरी किया है कि फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स MDM और ICDS में इस्तेमाल होने चाहिए, और डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज जो है वो फोर्टिफाइड राइस और फोर्टिफाइड आटा कुछ जगह पे PDS के थ्रू दे रहे हैं। इसके अलावा जैसे अभी प्रथा जी ने बताया भी था कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि फोर्टिफाइड राइस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर वेरियस गवर्नमेंट फूड सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स एंड इट विल बिकम यूनिवर्सल बाय 2024। और हम 2024 से दूर नहीं है, साल भर नहीं बचा और हमको इसमें दौड़ लगानी है। फूड व्हीकल्स एंड फोर्टिफिकेंट्स जो हैं, ये व्हीट फ्लावर, ऑयल एंड मिल्क, सॉल्ट है, ये स्टेपल्स हैं, और इनमें आयरन, फोलिक एसिड, B12 डाला जाता है। ऑयल और मिल्क में विटामिन A और D डाला जाता है, और सॉल्ट में आयोडीन और अब आयरन भी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। विस्तार में इसके ऊपर आपको नेक्स्ट स्पीकर बताएंगे, अद्वैत। क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के लिए देखिए बेसिक मंत्रा क्या है, इफ इट इज नॉट सेफ इट इज नॉट फूड। सो फूड हैज टू बी सेफ एंड फोर्टिफिकेशन हैज टू बी सेफ। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सेफ्टी चेक्स इंश्योर किए हैं ताकि क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फोर्टिफाइड राइस इज मेंटेन्ड। और एक उन्होंने क्वालिटी रेटिंग चेकलिस्ट भी मैन्युफैक्चरर्स की इंट्रोड्यूस की है ताकि
क्वालिटी को, FRK की क्वालिटी को मजबूत किया जाए, ऑडिट हो मिल्स के, असेसमेंट की जाए कि वो स्टैंडर्ड्स को एडहियर कर रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं तो उनकी फिर ट्रेनिंग करेंगे। फिक्सी तो है ही स्किल ट्रेनिंग के लिए, सो सारी ट्रेनिंग्स दी जाएंगी ताकि गुणवत्ता बेहतर बढ़ाई जा सके, और इंडस्ट्री की कैपेसिटी बढ़ाए ताकि जितने भी फूड सेक्टर है वो खुशी से बिना किसी डर के फोर्टिफिकेशन अपना सके। इसका इम्पैक्ट होता है या नहीं, अगर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये NFHS 4 का डेटा है, क्योंकि जब अंडरवेट और राजस्थान में हमने फोर्टिफिकेशन शुरू किया था, अगर आप देखेंगे तो अंडरवेट स्टंटिंग और अंडर 5 मोर्टालिटी बराबर है, और कितनों ने 1 डोज ऑफ विटामिन ए लिया उसमें देखेंगे तो इंडिया लेवल ज्यादा है और राजस्थान में 40 है, इंडिया में 60 है। बट अगर आप विटामिन ए डेफिशिएंसी देखेंगे तो ऑल इंडिया लेवल इज 21.5 to 15.6 और राजस्थान में 1 to 1.9% है। ये ऐसा चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि राजस्थान में fortification of edible oil with vitamin A and D is mandatory. Similarly, हमने 2012 से 2014 में फोर्टिफाइड व्हीट फ्लावर PDS में देना शुरू किया था, जिसकी वजह से आप ये देखेंगे कि देयर इज अ 7% रिडक्शन इन अनीमिया। पर क्योंकि उसके बाद ये बढ़ाया नहीं तो वापस फिगर्स आ गए। सो इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स एट द पॉपुलेशन लेवल does make a difference to improve the health. और फोर्टिफिकेशन कहाँ पे यूज किया जा सकता है? ICDS, MDM, PDS and open market for every product. Why should we be focusing on fortification of rice? Because 65% of the population जो है वो लगभग 7 किलो चावल हर महीने खाती है, और अगर वो इतना चावल खा रहे हैं तो उनको चावल के साथ कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे देना बहुत बढ़िया बात होगी। सो ये एक आइडियल व्हीकल हो जाता है जिससे हम न्यूट्रिशन गैप को ब्रिज कर सकते हैं और हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और एज यू कैन सी, एज मेनी एज 269 districts in 27 states are already distributing fortified wheat flour through fortified rice through PDS. प्रोसेस ऑफ राइस फोर्टिफिकेशन डिटेल में आपको अद्वैत बताएंगे, बट बेसिकली चावल का पाउडर बनाया जाता है, उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं इन द रिक्वायर्ड अमाउंट, फिर उनको एक्सट्रूडेड उसका गूंधा जाता है और एक्सट्रूजन प्रोसेस से FRK बनाया जाता है, और उस FRK को रेगुलर राइस में 1:100 के रेशियो में ब्लेंड किया जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है उन्होंने एक गाइडलाइंस इशू की हुई है, जो जिसका रेफरेंस मैंने यहाँ दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रोक्योरमेंट और लिफ्टिंग अगर हम देखें तो आपको ये देख के बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी कंट्री में 367 FRK सप्लायर्स हैं, फोर्टिफाइड राइस कर्नल सप्लायर्स हैं, और हमारी कैपेसिटी टू फोर्टिफाई राइस मिलिंग ब्लेंडिंग बहुत हाई है, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल। की डिपार्टमेंट्स जो हैं FSSAI है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, मिड डे मील्स है, फूड एंड सिविल सप्लाईज है, FICSI है, कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, ये सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। और डेवलपमेंट सेक्टर पार्टनर्स में गेन है, टाटा ट्रस्ट, यूनिसेफ, WFP, न्यूट्रिशन इंटरनेशनल पार्क, ये FFI, ये भी ICCIDD ये भी फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, एज यू कैन सी। नाउ मैं इसके ऊपर आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ। आप लोग आजकल बहुत सुनते होंगे, कई बार अखबारों में भी पढ़ लेते होंगे कि वो अगर फोर्टिफिकेशन कर दिया जाए तो क्या ये हमारे शरीर के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बेहतर है या नहीं बेहतर। तो अगर आप देखते हैं तो ये EAR, RDA और टॉलरेबल अपर लिमिट, आप ये समझिए कि टॉलरेबल अपर लिमिट जो है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डेली न्यूट्रिएंट इनटेक है which poses no risk whatsoever और no adverse impact।
सो हमको ये देखना है कि क्या हम फोर्टिफिकेशन से TOL को क्रॉस कर रहे हैं, देख लीजिए। EAR है 11 और 15, RDA, और हम आयरन कितना डाल रहे हैं थ्रू फोर्टिफिकेशन। अगर आप 250 ग्राम अनाज खा रहे हैं तो केवल 5.4 मिलीग्राम। टोटल कितना बनता है 16.4 या 20.4, और ये टॉलरेबल अपर लिमिट क्रॉस कहाँ कर रहा है? इट इज ओनली 37% इन मेन एंड 45% इन विमेन। और उसमें भी अगर आप देखेंगे हम तो एक RDA भी नहीं क्रॉस कर रहे। RDA होता है आप रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के 90% पॉपुलेशन को इतना लेवल लेना चाहिए, हम वो भी नहीं क्रॉस कर रहे हैं। सो स्टेपल फूड फोर्टिफिकेशन has very rich investments on has very rich returns on very low investments. It has the great potential to enrich the food as well as the lives of people. It's a basic right and we all deserve it. So let's join hands together for improving the health of our people. Let's eat wise or we'll be otherwise. So thank you so much. Food fortification is yet an unfinished agenda. Let's join hands to provide good health and improved quality of life to all. So let's eat right, let's eat fortified. Thank you. Thanks so much, ma'am. This was really insightful. I hope, as I could witness, from all the thumbs up and, the appreciation that was happening while you were presenting, that is a clear indicator that, how much people appreciated to the knowledge that you have delivered on this forum here. Moving ahead, I would now like to call upon my colleague, Advait Deshpande. He's the senior executive working in FICSI, who has been working, in the fortification domain from the last couple of years. So he will be taking you all through the process of rice fortification, along with shedding some light upon, the standards that FSSAI has put for fortified rice. Over to you, Advait. Just one more thing, before I pass it on to Advait. Once he finishes his presentation, we will be opening the forum for questions, through chat. And I hope, that you keep your questions with you. And I can see some people who have raised their hands. Just wait for another couple of minutes. Once Advait finishes his presentation, we'll be opening the forum for your questions. Thank you. So good evening everyone. As Deepti ma'am recently eloquently covered what is fortification, what is need, she also touched upon some nutritional aspect of fortification. But in today's session, I'm going to discuss about the processing of fortified rice. I will give you brief outline how fortified rice is being processed. Then I will take you through standards on fortified rice. Then I will also touch upon labeling requirements which are stipulated by FSSAI for fortified rice. So friends, as Deepti ma'am already covered what is fortification. But just to give you a definition, the fortification is a process of addition of micronutrient as prescribed by regulators to normal rice. Here I have varily used the word prescribed by regulators because if somebody is adding micronutrients which are not stipulated by FSSAI, then that is not considered as fortified. So it should be noted that if
A fortified rice contains the micronutrients such as iron, folic acid, and vitamin B12 as prescribed by FICSI. Then and then only it is considered as fortified. So friends, there are three methods which are being used for fortification of rice. As you can see on screen, there is one method called as coating. In coating, the premix is mixed with some blending binding agent and is sprayed on the rice kernel. Then second method is dusting. In dusting method, the premix powder is literally mixed with rice and it is adhered to that rice kernel through electrostatic forces. And third method is FRK extrusion. In FRK extrusion, the rice flour and premixes are blended, and these are passed through the extrusion and are forced to form a FRK, which is fortified rice kernel. So if we consider three technologies, which one is the best? So if you ask me, due to several criteria, this FRK extrusion has edge over the rest of two. It is due to several reasons, as you can see on screen. Is due to high storage stability as well as stability during cooking. Then low processing cost. The cost of manufacturing of FRK is much lower as compared to the dusting and coating process. Then there is low nutrient loss during cooking and during distribution, and high consumer acceptability. The FRK form has, compared to other methods, there is high consumer acceptability. Just because like if somebody is dusting the simply premix powder, then it might feel like chalky, or there might be some metallic test afterwards. So as compared to other methods, FRK has a high consumer acceptability. So what is basically FRK? As I told you, simply a rice flour is taken, then amount of some vitamin and premix which are stipulated by FSSAI are mixed, then it is subjected to extrusion. Those who are not aware about what extrusion is, as I know that some people might be from nutrition background and not necessarily everyone are food technologists in the seminar. So extrusion is a process in which this mixture is mixed properly, then converted into dough, and that dough is subjected to extrusion, in which high pressure and heat is applied on it to convert this into a fortified rice kernel like shape. So this is called as fortified rice. So friends, I will now take you to how this FRK is produced. So as you can see on the flow chart, first this vitamin premix, which consists of particularly iron, folic acid, and vitamin B12 in a particular amount, is mixed with the rice flour. Then this is mixed with help of water and a dough is formed. Then this dough is subjected to extrusion. Extruder is just like you might have seen at a home scale, you might have like how this vermicelli are formed. Just like that, a machine is there which is called as extruder, which makes fortified rice kernels. Then this extruded, then after that, when pressure is applied, it converts it into small rice like kernels, which are dried. After that, these dried kernels are cooled, then these are stored and packed for further distribution or blending. So this is the processing flow line of fortified rice production. As you can see, there is one mixture. With my pointer, you are able to see. Here, rice and the rice flour and premix is mixed. Then with the help of screw conveyor, or in some plants, there might be pneumatic conveyors. This is subjected to extruder, where it is converted into FRK. Then these FRKs are subjected to vibrating screen, as these are slightly moist and they might be clumsy. Just to break those lumps, it is subjected to vibrating screen. At some processing plants, this vibrating screen might be also like over the vibrating screen, there might be a hot blown air just to dry the surface so that they will not stick to each other. Then this through that vibrating screen, it is converted to dryers. The dryers can be of a different type.
For instance, industrially, there are various dryers such as multi-layer dryers or conveyor dryers are used. This is subjected to drying just to reduce the moisture content. If we consider the processing technicality, the moisture content of the FRK should be less than 12%. It is due to the processing aspect as well as it's a regulatory requirement also. Then after drying, it is subjected to cooling conveyor. Why it is subjected to cooling conveyor? Because after drying, if you directly pack it, then there might be a trapping of moisture, which may lead to development of fungus or molds in the product, as well as it may interact with the packaging material, and there might be leaching of some harmful chemicals from the packaging to FRK. So it is cooled and then it is packed for further distribution. So as you can see, this is how FRK looks. So friends, I want to share one fact that you might have heard like some WhatsApp University geniuses back some years used to promulgate that there is production of plastic rice. So that is not a plastic rice. As a food technologist or being a literate people, we should not support that. This is FRK, which consists of the minerals and vitamins and totally rice flour. However, this is just a half process. It should be noted that this FRK should not be consumed directly. Further, it is also processed to convert it into fortified rice. This is just a half process. Now I will take you how fortified rice is made. That was just a half process FRK. Now how rice is being fortified. So rice fortification is not a rocket science. It is just like we are blending the normal rice kernel with the fortified rice kernel, and that's how fortified rice is produced. So friend, as I previously delineated, that rice flour, vitamins and water is mixed, then it is extruded to form a FRK. Now at simultaneously, rice is milled and converted into a traditional milled rice, and this is blended in a particular amount. So in blender, this FRK and rice are mixed in 1:100 ratio. Now why specifically 1:100 ratio? Because it is stipulated by FSSAI. And second thing, this uniform distribution leads to particular requirement of nutrition. So these are mixed in one quantity of FRK and rest of rice, means like 1 kg of FRK into 99 kg of normal rice kernels to form fortified rice. So the only thing, the technical thing in fortification of rice is blending. So what are the types of blendings which are being used? So there is one approach of blending known as a batch, in which the rice is processed in form of a batch, and other is continuous, in which continuously form. So what are the selection criteria of blender? See, there can be a various selection criteria, but what significant and important criteria, several criteria I have listed here. One of the major selection criteria is what is the capacity of mill. So if it's obvious that if the rice mill capacity is very high, then the manufacturer may install the continuous kind of blender. Then secondly, what is the capital investment put on the equipment? These are several economic factors which everyone needs to consider. Then third thing is operational as. Most important thing I would like to cover here is that the effectiveness of fortification is being judged on effectiveness of blending. Suppose if blending is not proper, then the nutritional impact of that rice will not be, effectiveness of rice will not be there. So one should ensure that whether the blending process is effective or not. So that need to be considered. Fourth point is time of blending, and whether the grain of whether the grain is suitable for blending or not. So these factors need to be considered while blending. So as you can see, here is a batch blending. For batch blending, as a food technologist, some people might be aware that shaft blenders are being used. Shaft blender, there are two shaft which rotates either in a counter current manner or in concurrent manner. So
there is one hopper installed. There are two hoppers which are installed on the top of the equipment. Through one hopper, FRK is supplied, and through other hopper, regular rice kernels are supplied through bucket elevator. Then for a particular time, which is optimized by the manufacturer, they mixed it to achieve the ratio of 1:100, and then it is packed. Similarly, there is other approaches, continuous blender. In continuous blending process, there are blenders like ribbon blenders are widely being used in rice fortification. So in ribbon blender, a ribbon, hexagonal ribbons are used, and then FRK and fortified rice kernels are subjected to the ribbon blender, and the blending desired blending ratio is achieved. So friends, as you can see, this is how fortified rice looks like. So as you can see, there is no, it's very difficult to differentiate between the fortified rice and the normal rice. So now I am going to take you through the standards of fortified rice. Friends, FSSAI has stipulated one regulation called as Food Safety and Standard Regulation, Food Fortification of Food in 2018. In that regulation, it is prescribed that FRK, this FRK should contain iron, folic acid, and vitamin B12. It is mandatory that if rice is being fortified, then it should contain iron, folic acid, and vitamin B12 as the quantity is stipulated, as you can see on screen. Similarly, in addition, if somebody wants to add more nutrients to it, then they may add zinc, vitamin A, vitamin B1, B2, niacin, which is vitamin B3, and pyridoxine. So in fortified rice, similarly, the same micronutrients which are prescribed should be there, like iron, folic acid, vitamin B12. So the source might vary. So particularly for iron, ferric pyrophosphate is being largely used. However, as according to the prescribed standards, so somebody can even use sodium ion EDTA. Similarly, it can also fortified rice can also contain zinc, vitamin A, vitamin B1, B12, B3, and B6. So friends, now I will be touching upon what is the packaging and labeling requirement for fortified rice. So as you know that FSSAI has prescribed standards for processed food, and fortified rice is no exception to it. So if somebody is manufacturing the fortified rice, then one need to follow the packaging and labeling regulation 2011. Whatever the clauses are there, one need to stringently adhere to those clauses. Then secondly, if somebody is manufacturing the fortified rice, then they have to put the plus F logo. I will show you it in next slide. Second thing, if some that fortification package of fortified rice should contain a statement, caution statement like people with thalassemia may take under medical supervision, and person with sickle cell anemia are not advised to consume the iron fortified product. They should avoid it. So that's how this plus F logo looks. So this is a blue color logo is present on the front of the packaging. Below that logo, there is written line like fortified with iron, folic acid, and vitamin B12. So whatsoever micronutrients as according to standards you are adding, you need to write it fortified with XYZ nutrients you are adding. So the third thing I would like to cover is labeling requirements. You might have seen the nutritional information panel on the package, back of the package. So instead of writing simply iron or folic acid, one need to write added iron, added folic acid, or added vitamin B12. And one also need to stipulate what's the quantity of the particular micronutrient. So that's all. I would like to over to Pritha ma'am.
Thanks for this information, Advait. I think most of the queries regarding the fortified rice we have touched upon. So now we are opening the deck for questions. So all the participants here, if you have any question that you would like to ask our speakers, you can type it in the chat window. Chat is showing is turned off. Kamal. No? Okay. We're taking questions now. तो मेरे सिस्टम Okay. There is a question from Gayatri. Has there been any movement in terms of fortification of rice with protein? Over to you, ma'am. Rice does not require any supplement, any fortification with protein, because it is a good source of protein, even though the all amino acids are not present. You know, we have different categories of protein: A class protein, B class protein, C class protein. A class proteins are milk and milk products, because and meat, egg and milk are the perfect proteins because they have all the amino acids. Cereals have one or other amino acid lacking, and pulses also have one or more amino acids lacking. But हमारी तो कंट्री में बहुत बढ़िया चीज है ना, हम दाल चावल खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं. सो जो दाल का मिसिंग अमाइनो एसिड है वो रोटी या चावल में से मिल जाता है. सो कॉम्बिनेशन बिकम्स एज गुड एज A class protein. So we really don't need to fortify or add any protein into our cereals. You keep your thing on. I'll ask what okay. So the next question is from Harshada Pawar. She is asking, what is the shelf life of fortified rice kernels of FRK? What is the shelf life? A very good question. And I can only tell you one thing, that whenever we are doing fortification, we ensure that all the micronutrients that we are adding, their shelf life matches with the shelf life of the end product. आप ये नहीं होता कि अगर हमने wheat flour को fortify किया तो आयरन फोलिक एसिड पहले खत्म हो जाए और wheat flour बाद में. सिमिलरली राइस जो है, राइस ग्रेन में जब हम ब्लेंडिंग करते हैं, ब्लेंडिंग करके उसको खुला नहीं छोड़ते. चावल जरूर पड़े रह सकते हैं सालों साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी, और 1 ईयर भी. 1 ईयर नॉर्मली हम कहते हैं कि अच्छा ओल्ड राइस है. सो जो हमारे FR के हैं उनकी शेल्फ लाइफ भी डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन से मैच करी जाती है, और मिनिमम 1 ईयर की शेल्फ लाइफ तो FRK की जरूर होती है. Ma'am, the next question is from Mr. Dinesh Shinde. He's asking, what will be the strategy if there is an overconsumption of fortificants in consumer? हो ही नहीं सकती बॉस. ओवर कंजम्पशन ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर आपने जैसे देखा टॉलरेबल अपर लिमिट, जिस लेवल तक आप कंज्यूम करो तो हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा. You see, when you are consuming 250 grams of wheat flour which is fortified, 250 grams of wheat flour means 10 chapatis. So आप 250 grams of wheat flour और 250 grams of rice तो खा ही नहीं सकते. Best thing about food fortification is that food is self-limiting. आपका पेट आपको बोल देगा बस करो बॉस और नहीं खाना, पेट भर गया. तो आप जब खा ही नहीं पाओगे तो ओवर फोर्टिफिकेशन या एक्सेस हो ही नहीं सकती. मिल्क में
आप जितना मर्जी डाल लो, आप 4 लीटर दूध थोड़ी पी सकते हो, तब भी नहीं होगी एक्सेस। सिमिलरली हम रिकमेंड करते हैं 25 ग्राम्स ऑफ ऑयल। आप 100 ग्राम्स ऑफ ऑयल भी रोज खा लेंगे तो भी लिमिट क्रॉस नहीं होती विटामिन डी की। Similarly, iron in wheat flour and iron in rice, no harm whatsoever. Okay. Ma'am, the next question is from Ms. Jyoti Patricia. She is asking, does fortified rice maintains its nutrition after cooking? Of course, अगर नहीं होता कच्चे चावल तो कोई खा ही नहीं सकता ना। तो जब भी कोई साइंस बेस्ड इंटरवेंशन की जाती है, उसमें ये जरूर देखा जाता है कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन में कितना लॉस होगा, इसकी स्टोरेज में कितना लॉस होगा, इसकी कुकिंग में कितना लॉस होगा, और जब हम खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर कितना जा रहा है। अगर कुकिंग लॉस होता, ट्रांसपोर्टेशन लॉस हाई होता, तो हम इतना कष्ट ही क्यों करें राइस को फोर्टिफाई करने का। ठीक है। सो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फोर्टिफिकेशन लेवल्स डिटरमिन किए जाते हैं। देयर इज सम बिट ऑफ लॉस समटाइम्स, और उसको कवर करने के लिए स्लाइट ओवरेजेस डाली जाती हैं जो आपके लिए सेहतमंद है, नुकसानदायक नहीं है। मैम, अगला क्वेश्चन है राजेंद्र कुमार जी से। he is asking, we have to mention the added fortified quantity in the label, or we need to test for the fortificant in the end product quantity and mention in the label? I think I will pass it on to Advait. From my side, I can only say one thing. Yeah. So Advait, the question is, we have to mention the added fortified quantity in the label, or we need to test for the fortificant in the end product quantity and mention in the label. So end product quantity is usually tested, and that through the lab prescribed by FSSAI only, it will be valid. So one need to only test the fortified rice after it is being produced. But there are standards for FRK. So अगर आपने FRK को टेस्ट कराना है, आप FRK को भी टेस्ट करा सकते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स फर्क हैं, और फोर्टिफाइड राइस के स्टैंडर्ड्स फर्क हैं, क्योंकि फोर्टिफाइड राइस में FRK ब्लेंड हो चुका है। Okay. So I think it's already 5:20 now. What I would request now to everyone, first there was a question, from some participants when we be getting the certificates. So now I request all of you to kindly drop in your email IDs in the chat box. Okay. So what we would be doing is, for the to those questions and put it on the website also. Okay. So I think with that, I think we have shared the feedback form on the chat here, and all the other people, I think there was some issue. I think I was on mute and each one of us was on mute when I was talking. So I'll repeat myself again. So what I was saying is, all of you who are leaving your email IDs here, we will be sending across a feedback link to you. Okay. And it is also shared here in the chat box itself. And further to that, you can reach out to us from at trainings@FICSI.in, and all your remaining queries, it would be helpful if you can write it back there.
And as I mentioned earlier, we would be starting our second season. So we did a food varta, that was an audio podcast first season, under which we did around 11 interesting sessions pertaining to the food processing sector. We are coming up with a second season of video podcast now, and of which fortified rice will be one of the topics. So I hope that we'll be able to address your queries on that forum. And also, we also have developed a course on fortified rice kernel technician. So you'll be able to check on that course as well. Plus, we are also going to conduct a one-day workshop in NIFTEM in the month of June, dates of which will be out and along with the details. So this particular course is a hands-on workshop that will take you through the process of fortifying rice and blending it and making fortified rice. So I hope people who would be interested in it should definitely get in touch with us. And that's all. On behalf of FICSI, I would really like to thank Deepti ma'am, for coming and addressing this webinar for us, and trying to address the queries and also some misconceptions that are there with regards to fortification, why it is important and things like that. And thanks Advait for doing such a beautiful presentation, which was very effective, that took us through the process of rice fortification and covering essentially the regulations and the packaging and labeling requirements. And on behalf of FICSI, I thank each and every participant who has come here. And we are almost 20 minutes late than our ending time, but still, looking at the number of people who are still there, I think that session was really good. And I hope to see you all in the next webinar, which we will be conducting on millets now, hopefully next week. And with regards to the PPTs that you guys are asking, I will be putting it across through our LMS, which is the learning management system of FICSI. So if you need access to that, I'll let you know how you can access those slides there. Thanks, everyone. Have a good day. Have a good week. Thanks again. I hope you had an interesting session. Thanks. Thank you so much.